next question says four substances are heated gently. The temperature with the start and finish melting are recorded. Okay. Which statement about the substance is correct? All right. Which statement about the substance is correct? It says substance one is only pure substance. Actually, a pure substance is one which has a fixed melting and boiling point. So this one, substance number one and substance number two, both of them are pure because they both have a fixed melting and boiling point. Actually, fixed melting point is what we have. Substance 3 and 4 are impure. Yeah, that is right, because 3 and 4 have a range of melting points. Substance 4 is water. We cannot say it, first of all, it's not pure substance. So it can be some mixture of water, but we cannot say that it is pure water. All right. They're all solids at room temperature. Again, for this, we'll have to see what the melting point is. If the melting point is above 25 degrees Celsius, then it will be a solid at room temperature. But we can see that number two is a melting at zero. So it means it will be uh, liquid at room temperature. A substance dissolves in water to form a colorless solution. The solution reacts with aqueous silver nitrate in the presence of dilute nitric acid. क्या हो रहा है? Silver nitrate है. Silver ion tests for group 7. So that's one. Secondly, it says it forms a colorless solution. That means there is no transition metal present. So there is some uh, non-transition metal, but there is probably a halogen ion because it says that it forms a yellow precipitate. For halides, we have chloride, bromide, and iodide each with a negative charge. When they react with silver, so with silver, these things, chloride is white, bromide is off-white, and iodide is yellow. Okay. So those are the colors that we have. So this must be an iodide, but without a transition metal. So A. All right. Which statements are correct? The volume of gas at constant pressure increases as the temperature increases. क्या कहना चाह रहा है ये? It's saying how is volume related to temperature? और हमें पता है that volume is directly proportional to temperature. Okay. As you increase the temperature, they have more kinetic energy. They move around more if the pressure is constant. The rate of diffusion increases as the temperature increases. Again, rate of diffusion depends on average kinetic energy, and average kinetic energy depends on temperature. So if you increase the temperature, average kinetic energy increases. So rate of diffusion also increases. The pressure of a gas at constant volume decreases as the temperature increases. So it's saying, this one is saying that pressure is inversely related to temperature. There is no law that we know that does this. In fact, we do know that pressure is directly related to temperature if the volume is constant because they have more kinetic energy, they collide with each other and the walls more, which means that they are able to uh, increase the pressure. So third one is wrong, one and two are correct. Which particle contains the greatest number of electrons? अब इसके लिए हमें periodic table देखना है और periodic table देखने का तरीका क्या होता है? If it says magnesium positive 2, then look at magnesium and move 2 steps back. That's how many electrons it has. So अगर मैं periodic table में देखता हूँ, I have a copy of periodic table here. Yeah, so we have magnesium here. If I move 2 steps back, I get to neon. That means magnesium ion में 10 electron है. ठीक है? So using a copy of periodic table, you can easily count how many electrons anything has. Obviously, otherwise, the other method is to simply subtract the number of electrons from the proton number. So magnesium will be 12 minus 2, which is 10. Nitrogen will be 7 minus 3, which is 10 again. Neon is naturally 10, and S2 minus is the highest one because I think it has 18 now. 16 minus 2, 18. Which substance has a giant covalent structure at room temperature? So giant covalent structure, हमारे पास 6 में answer will be B, sand. Then we have one atom of element X and two atoms of element Y react to form an ionic compound. By the way, in the poll, are you able to change the like select an option again, like change your answer? Does it allow you to do that? I think so. Okay, so we can do it for each question as we move on. So if you try for question number 7, then you can put in your answer and I'll discuss it. I think a better idea would be that you guys solve the paper before you come to class, and that way we can check our answers as we go on. All right. So question number 7 says
that one atom of element X and two atoms of element Y react to form an ionic compound. That means the ratio is 1 to 2. Okay. Element X forms a positive ion. So element X must be something that you need with a double charge. It has a double charge than Y. So I think calcium and chlorine make a good pair for this because CaCl2. Why? Because calcium is in group 2, it will have positive 2 charge, and chlorine is in group 7, it will have negative 1 charge. So when they actually react, it will form CaCl2. An element with a high melting point forms an oxide that is gaseous at room temperature. Okay. So there is something that is a high melting point, but its oxide is gaseous. We know that there are oxides of non-metals that are gaseous, like carbon dioxide or nitrogen dioxide or sulfur dioxide. Which type of structure bonding is present in the element? So if we take it to be carbon, it will be giant covalent. Okay. It can't be ionic, it can't be metallic because we don't know of any non-metal with that bonding. And then for simple molecular, sulfur, for example, is a solid at room temperature, but it is not high melting point. It melts pretty low temperatures. So we can't select D. So the answer is A because carbon is giant covalent structure and has a high melting point. Okay. Which statement explains why aluminium is malleable? Now they could have said gold, they could have said iron, but our reasoning won't change. The reason is that it is malleable, any metal is malleable because it has a layer of cations that can slide over each other. Electrons don't have anything to do with it. It's just the layers that we have in them that slide over each other. So it can be A. Now, in such questions where they ask you for a certain reason, it is possible that all the other statements are factually correct. ये बात हो सकती है कि वो बात ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी रीजन ना हो. ठीक है. जैसे वो अगर आपसे पूछे कि why do metals have high melting point, so अब उसकी actual reason is कि they have strong electrostatic forces between cations and electrons. लेकिन वो ये कह सकता है कि metals uh, have a regular structure या metals have free electrons. अब वो बात तो ठीक है लेकिन it doesn't give the reason. So you also have to make sure that your answer is relevant. It doesn't have to be just factually correct, it should be relevant. All right, incomplete combustion equation for the reaction between ethine and oxygen is shown. Ethine के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? That ethine is C2H2. It is the first alkyne. It has triple carbon carbon bond in it, and it is used as fuel for welding. Okay, because it burns with a very highly exothermic reaction. So that is why. So we just have to balance this equation. We have 4 carbons, so we'll get 4 carbon dioxide, and we have 4 hydrogen, so we'll get 2 water. So because of 2 water and because of 4 carbon dioxide, we have a total of 10 oxygen atoms. So it will be 5. Okay. So the answer is going to be 5, 4, 2. So for oxygen, it's going to be 5. A compound contains 40% carbon, 6.7% hydrogen, and all that. So percentage by mass aa gaya. So most likely they're asking us for empirical formula, and using that we'll find the molecular formula. So 40 over 12 for carbon, 6.7 over 1 for hydrogen. Notice that I'm dividing by AR, not MR, because I'm talking about the elements here. So 53.3 divided by 16 is for oxygen. So I'll get something around 2.7, I think. 3.3 actually. So 3.3, that is 6.7. Sorry. And that one is 53.3 divided by 16 is 3.33 again. So I divided by the smallest one, which is this one. And I get the ratio 1 to 1. Now, if I have that CH2O, my empirical mass would be 12 plus 2 plus 16, which is 30. Is it? Yeah. So इसका मतलब है कि मुझे अगर mass 55 और 65 के बीच में चाहिए तो इसका मतलब है इसका डबल करना पड़ेगा.
which is 60, which will give me C2H4O2. So what do I have here? C, and that's my answer. What is observed during the electrolysis of aqueous copper 2 sulfate using carbon electrode? तो इसमें आप ध्यान में रखें कि जब भी सॉल्ट मेटल सॉल्ट का जिसमें कॉपर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं आप, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर इज द वन दैट्स गोइंग टू डिपॉजिट ऑन द कैथोड. अब वो कॉपर कहाँ से आएगा? देयर आर टू ऑप्शंस. One option is that the copper will come from the anode that we have. तो अगर एनोड कार्बन से बना हुआ है तो वो तो कॉपर प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो दो ही चांसेस हैं कहां से कॉपर आ सकता है, या वो आपका एनोड से आ सकता है या वो आपके सॉल्यूशन से आ सकता है. सो इफ यू हैव एन एनोड दैट इज मेड ऑफ कॉपर, तो वो प्रोवाइड करेगा. लेकिन अगर वो नहीं है, then solution will be the one to provide it. So in this case, you have carbon electrodes, so copper is going to come from the solution. So the color of the solution will fade because copper 2 उसमें से आ रहा है and it's going towards the cathode and discharging. Okay. Now, negative electrode is cathode and positive electrode is anode. So don't confuse them. So the answer here is C because color of the solution fades. Copper 2 ion is blue in water, but as it discharges, you get less and less of that color. There is going to be some metal ion that is or positive ion that's going to come to the cathode. अब वो पॉजिटिव आयन दो जगह से आ सकते हैं, या वो आपके एनोड से आता है या वो आपके सॉल्यूशन से आता है. राइट नाउ वी हैव कार्बन एनोड, तो कार्बन इज अनरिएक्टिव, वो तो डिस्चार्ज नहीं करेगा. लेकिन सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर विल कम टुवर्ड्स द cathode. So what you will see is that copper 2 from the solution becomes copper solid at the cathode. और उससे जो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन है वो फेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉपर 2 आयन इज गोइंग टू गिव ब्लू कलर, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो गया इट्स गोइंग टू बिकम अ पिंक सॉलिड which is not part of the solution. All right, four processes using electrolysis are listed below. The electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. Remember, when you have concentrated salts, especially halide salts, they are the ones to discharge. जो halides होते हैं आपके पास. लेकिन अगर आपके पास acids हैं, dilute acid में, it is water that breaks down. उसका electrolysis होता है. Hydrogen और oxygen आता है. और concentrated acid में acid is the one that's going to break down. So अगर HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आएगा, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड आएगी. ऑलराइट, व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स? ऑक्सीजन कब आएगी? जब या तो ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस हो या वाटर ब्रेकडाउन हो. दो ही केसेस हैं आपके पास. सो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन आयन है, ऑक्सीजन नहीं आ सकती. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये कोई भी एसिड हो सकता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड जो होगा उसमें वाटर ही ब्रेक डाउन करता है, तो ऑक्सीजन आएगा बिकॉज वाटर इज H2O. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन डिस्चार्ज होगा. ठीक है, ऑक्सीजन डिस्चार्ज होकर बनेगा, आई मीन. एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर 2 सल्फेट. नो, व्हेन वी डू प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर वी हैव कॉपर एनोड, सो वहां से आयन प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनोड अगर कॉपर का होगा तो वो प्रोवाइड करेगा. सो 2 and 3 आर द वंस दैट गिव अस ऑक्सीजन. Alright, which statement about endothermic reactions is correct? Energy is absorbed from the surroundings. Yeah, that is true. Energy is released to the surrounding. ये हो नहीं सकता, ये exothermic है. Temperature of the reaction mixture falls. देखें, reaction mixture is the surrounding. तो अगर it is losing its energy और वो energy convert हो रही है chemical energy में, so temperature will definitely fall. तो चीजें ठंडी हो जाती हैं in endothermic reaction. ठीक है. और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर कहाँ से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है? अपनी सराउंडिंग से, और वो सराउंडिंग क्या है? रिएक्शन मिक्सचर इज द सराउंडिंग. सो 1 and 3 आर करेक्ट. A fuel is completely burnt in air. Carbon dioxide, water and heat are produced. That means इस फ्यूल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा हो. Which energy profile diagram is correct for burning a fuel? देखें, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है.
But like all chemical reactions, it must have some activation energy. A and B is probably some hill climbing structure. It is not a chemical reaction क्योंकि इसमें activation energy नाम की चीज ही नहीं है. ऐसे तो कोई नहीं होता. And C and D are right as far as the activation energy part is concerned. But D is the one where the fuel is burning and absorbing energy. तो वो तो नहीं है ऐसा तो बेकार फ्यूल होगा अगर कोई दुनिया में होगा ऐसा सो देन सी इज द आंसर वेयर द फ्यूल बर्न्स हैज अ हायर एनर्जी इनिशियली और जैसे जैसे वो रिएक्ट करता है वो एनर्जी अपनी रिलीज करता है और एक लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है सो सी इज द आंसर इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस equation shows the reaction for manufacture of ammonia okay which change will decrease the activation energy of the reaction हमें activation energy कम करनी है and there is just one way which we know of to reduce that and that is catalyst जब catalyst होगा catalyst will provide a shortcut a different pathway और उस pathway की activation energy कम होगी so इस वजह से addition of a catalyst is the only option to decrease the activation energy और कोई option है ही नहीं ठीक है तो उसको हमें देखना भी नहीं Solid ammonium chloride is heated. What do we need to know about ammonium salts? First of all, we need to know that they're all acidic. Second, we need to know that they have ammonia trapped in them. So अगर उसको heat करते हैं तो ammonia gas निकल जाती है. अगर वो react करता है जैसे कि sodium hydroxide से react कर सकता है तो ammonia फिर भी निकल जाती है. Third, we need to know that it is a snap salt. Snap salt मैंने आपको बताया हुआ that they are all soluble in water. If you still have any issues about them, so you can obviously go through the lesson on salts, salt preparation. अगर फिर भी issues आते हैं, you can always contact me. So solid ammonium chloride is heated. The gases ammonia and hydrogen chloride are formed. Both of these gases are formed from ammonium chloride, but notice that one of them is basic and one of them is acidic. This is reaction one. ठीक है जी अमोनियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस बन रहा है अमोनिया गैस इज मिक्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अब ये उसका ऑपोजिट है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड ये वाइट सॉलिड होता है व्हेन वी हैव सीन दिस इन डिफ्यूजन रिएक्शंस ये इससे पिछले पेपर में भी ये था और ये मतलब आई डोंट नो दिस इज अ वेरी फेवरेट रिएक्शन ऑफ कैम्ब्रिज पीपल दिस इज रिएक्शन 2 ओके व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट एक रिएक्शन दूसरे का ऑपोजिट है नोटिस कि both reaction 1 and reaction 2 are exothermic ऐसे नहीं हो सकता अगर एक रिएक्शन दूसरे का ऑपोजिट है तो अगर एक को आप हीट कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है और वो हो सकता है कि एंडोथर्मिक हो लेकिन दूसरा वाला फिर उसका ऑपोजिट होगा एक्सोथर्मिक होगा ठीक है रिएक्शन 2 इज रिवर्सिबल रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है अमोनिया गैस को आप हाइड्रोजन क्लोराइड में रिएक्ट करवा रहे हो और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और रिएक्शन 1 में हम उसी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो रिवर्सल तो है अच्छा नाउ व्हाई वुड स्टूडेंट्स नॉट पिक दिस ऑप्शन दे विल थिंक कि ये रिएक्शन 1 को कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सल नहीं है बट द statement doesn't say that the statement just says reaction 2 is reversible it does not say reaction 1 is not reversible वो उसने बात ही नहीं की but that is what we assume we infer it from this which is wrong so take the words for what they mean so reaction 2 is reversible yes so take that option this is right but let's just still see the next one. The equation for reaction 1 is NH5Cl. That compound cannot exist actually. NH5Cl बन नहीं सकता. अगर NH5 बना भी लेंगे हम तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. वैसे NH5 भी नहीं बन सकता इतने एटम में साइज ही नहीं होता नाइट्रोजन के कि वो 5 के साथ बॉन्डिंग करे. The three substances involved in each reaction all have simple molecular structure. Interesting. Three हैं कौन से अमोनिया सिंपल मोलेकुलर हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपल मोलेकुलर अमोनियम क्लोराइड ionic because you know ammonium is an ion positive ion and chloride is negative ion so ammonium chloride ionic structure in a closed flask gases q and r reach an equilibrium क्या होता था when the rate of forward and backward reaction is the same and what's happening here you have 1 mole of q which is breaking down and making 2 moles of r which change will move the equilibrium to the right okay let's consider कि कौन सी options हो सकती हैं q is gas r is gas gaseous moles are more on the right side
That means if I decrease the pressure, it will go to the right so that it can increase the pressure. So that's one. I can decrease the pressure and drive it forward. It's a delta H is positive. It's an endothermic process. अगर मैं एनर्जी इंक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा, तो ये उसको कम करने के लिए पॉजिटिव की तरफ जाएगा. तो दिस इज अगेन पॉजिटिव फॉरवर्ड. तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तब भी, और प्रेशर डिक्रीज कर दें तब भी फॉरवर्ड की तरफ जाएगा. अगर मैं Q एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तब भी ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, बिकॉज इट विल ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ Q दैट वी हैव. अगर मैं कैटलिस्ट ऐड कर देता हूं, इट विल नॉट अफेक्ट इट एट ऑल. What will happen is that the forward and backward reaction will increase. They will both become faster, but it will not change the reaction in any way, the equilibrium in any way. Okay. So take the option saying increase the volume of the flask. Interesting. क्योंकि उसने increase the volume की बात की है, उसने आपको directly pressure की बात नहीं की. But we know that if you have higher volume for gases, they will have lower pressure. क्योंकि वही particles spread around हो जाएंगे, collisions कम हो जाएंगी. ठीक है? So it's going to be that option जिसमें हम pressure कम कर रहे हैं. Which reaction is redox? Redox को याद करने के लिए या identify करने के लिए I gave you a shortcut that if an element is changing to another state, like ion बन रहा है, it's a redox reaction. So A is the only one in which you have a metal element, magnesium, becoming magnesium ion. देख के ही बता सकते हैं कि redox है. मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे सामने. बाकी कोई रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है क्योंकि वो सबके सब न्यूट्रलाइजेशन है. ठीक है, और इस वजह से A is the one which is redox. अगर आप कोई डेफिनेशन देखना चाहते हो तो डेफिनेशंस में हमने पढ़ा हुआ है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो HCl हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हो गई. और कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि कहीं पे कार्बोनेट ब्रेक डाउन कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन स्टेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस नहीं हो रहा है, आयंस की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, चेंज हो रहा है. तो B, C and D में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एंड A इज द ओनली वन वेयर यू हैव redox. 20. Three separate mixtures of solution and solid are made. Okay, हमें नहीं बताया उसने कि उसमें क्या है. दो solution है, एक solid है. Okay. नहीं, three separate mixtures of solution and a solid. अच्छा, एक solid है और एक mixture है, एक solution है, इनको mix किया उसने. The mixtures are warmed. ठीक है जी. In which mixture does gas form? अच्छा, solid कौन कौन से हैं? Ammonium chloride. अभी हमने बात की, ammonium chloride is going to give us ammonia gas if it reacts or if it breaks down. तो यहां पर फर्स्ट में वो एल्कली के साथ अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहा है. अमोनियम सॉल्ट्स आर एसिडिक, वी नो दैट. और एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस जरूर देगा. ठीक है, इट विल ब्रेक डाउन, गिव हाइड्रोजन क्लोराइड HCl and NaOH which is going to react provide NaCl, H2O और अमोनिया. तो इसमें तो अमोनिया आएगी, तो वो गैस है. सेकेंड में H2SO4 और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर सीधा सीधा आयनिक डिस्प्लेसमेंट होनी है, न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अमोनियम सल्फेट और HCl बन जाएगा, तो इसमें कोई गैस नहीं आने वाली क्योंकि HCl विल डिसॉल्व इन वाटर, एक्वस होगा. H2SO4 and magnesium. Magnesium is more reactive, hydrogen is less reactive. Magnesium उसको डिस्प्लेस कर देगा. बड़े आराम से मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको पकड़ाएगा, उसकी जगह ले लेगा और हाइड्रोजन गैस बन के चली जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी. So you will get hydrogen gas. In the first one you're getting ammonia gas, in the third one you're getting hydrogen gas, और middle वाले में gas नहीं produce हो रही. So B. Alright, carbonate, chloride and sulfate of a metal are all soluble. ये बात करके उसने क्या बताया हमें? ये बात करके उसने हमें कहा है कि देखो स्नैप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. उसके अलावा कोई हो सकता है? बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि अगर आप कार्बोनेट लें जो स्नैप का कार्बोनेट नहीं है, या वो ग्रुप 1 का है जो कि हमारे सिलेबस में सिर्फ स्नैप ही है. सिलेबस के बाहर तो बहुत सारे हैं, मतलब लिथियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है, लेकिन सिलेबस में वी जस्ट हैव पोटेशियम एंड सोडियम जिनके सवाल आते हैं. सो स्नैप के तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल, और कार्बोनेट का नाम लेकर दे हैव टोल्ड अस कि भाई
स्नैप के अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि स्नैप के अलावा कोई कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता। क्लोराइड होते हैं, क्लोराइड सिर्फ सिल्वर, मर्करी, लेड, बल्कि मर्करी याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिल्वर और लेड इनसॉल्युबल याद रख लो, बाकी सॉल्युबल कर लो। सल्फेट यू हैव प्लीज कॉल बैक, लेड, कैल्शियम, बेरियम, दे आर इनसॉल्युबल। उनके अलावा कोई होगा सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन कार्बोनेट इज द वन फॉर विच एनीथिंग इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल इफ इट्स नॉट स्नैप। तो आंखें बंद करके स्नैप में से सिलेक्ट कर लें, पोटेशियम आपके सामने। Alright, which fertilizer contains the highest percentage of nitrogen by mass? हर बार ये सवाल आ जाता है। करना क्या है, आपने नाइट्रोजन को काउंट करना है। 2 नाइट्रोजन है, 28 मास हो जाएगा। क्यों? 2 टाइम्स 14। 3 नाइट्रोजन है, 42 मास हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन है, 28 हो जाएगा। 1 है, 14 हो जाएगा। बात यहां खत्म नहीं होती है, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज। अगर उसे परसेंटेज ना बोलता ना, अगर वो हमें सिर्फ कह देता जी नाइट्रोजन एक मोल से कितने निकलती, तो हमें पता है कि बी इज द आंसर, 42 ग्राम्स पर मोल दे रहा है वो। बाकियों में नहीं है ऐसा, लेकिन दे आस्क फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास, परसेंटेज निकालना है। So we divided by 80, we divide this by 149, we divide this by 132, we divide this by 101. Then we multiply by 100% because हमें percentage निकालना है। The one with the highest percentage के जी एक मोल में सबसे ज्यादा percentage wise नाइट्रोजन किसका ज्यादा है, वो। नाइट्रोजन इतना स्पेशल क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन इज द वन दैट वी नीड फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। पीपल हु स्टडी बायो नो बेटर कि वो नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है। डज एनीवन नो? What I know is that it's used to make proteins, but I don't know where the proteins are used. जी सर। कहाँ यूज होता है? सर प्रोटीन्स बनाने के लिए सर, जब सॉइल से वो लेते हैं नाइट्रेट्स आयंस की फॉर्म में। तो वो प्रोटीन कहाँ जाता है? सर वो प्लांट जिससे हमें न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, उसी तरह प्लांट को भी चाहिए होता नो आई मीन उसके स्टेम को चाहिए कि उसके फ्रूट को चाहिए? फ्रूट में तो नहीं होगा आई थिंक। कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें प्रोटीन काफी होता है। चलें, it's alright, we can all Google. Okay, which set of condition is used in the contact process? Contact process is the one where you produce sulfur trioxide from sulfur dioxide in a reversible reaction. तो उसके लिए हमें ये मतलब बहुत जतन करने पड़ते हैं, हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, हमें प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। तो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर करते हैं और V2O5 करते हैं। So D. Thank you, Ayla. Yeah, this is D. The diagram shows part of the periodic table. Okay, this is group 2 हमें नजर आ रहा है, this is group 7 हमें नजर आ रहा है. Okay. Which two represent elements that can react together to form covalent compounds? इधर देखना है आपने. Non-metals. तो Y and Z बात खत्म. The group 1 metals, lithium, sodium and potassium, show trends in their melting point and in their reaction with water. ग्रुप 1 मेटल्स बताती है उसने, उनके ट्रेंड्स है मेल्टिंग पॉइंट के, क्या है? कम होता है। रिएक्शन विद वाटर क्या है? एज यू गो डाउन द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों? एटम बिकम्स ग्रेटर इन साइज, इट इंक्रीजेस इट्स साइज, सो द इलेक्ट्रॉन गोज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। फोर्सेस वीक होती हैं, इट बिकम्स इजियर टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इस वजह से इट बिकम्स फास्ट, लाइक द रिएक्शन बिकम्स मोर विगरस, मोर एक्सप्लोसिव, दे बिकम मोर रिएक्टिव, ऑल ऑफ दैट बिकॉज एटम का साइज बढ़ा है। बहुत सिंपल सी रीजन है, एटम का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर है, लूज करना आसान है। Which statement is correct going down the group from lithium to potassium? Their melting point decrease and their reaction with water becomes less vigorous. पहली बार ठीक है, दूसरी बार गलत है। Their melting point decrease and their reaction with water becomes more vigorous. ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें। Their melting point increase वाला तो वहीं पे खत्म कर देना। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इट्स अ फैक्ट। इसकी रीजन आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है। वैसे रीजन मैंने आपको बता तो दी है, कैटाइन है, बड़ा कैटाइन होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा और इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक हो जाती हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, बात खत्म। ऑलराइट, 26 फ्रॉम देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल व्हिच प्रॉपर्टीज वुड यू एक्सपेक्ट द एलिमेंट्स वेनेडियम
chromium, cobalt to have. Radium, chromium, cobalt में common चीज क्या है? Periodic table में देखें, they are all in the transition metal block. तो transition metals हैं, तो transition metal वाली सारी qualities we will expect that they have them. जैसे कि variable oxidation states, colored compounds because of that variable oxidation state, high melting point because they have strong electrostatic forces. तीनों बातें तो हम उनमें expect करेंगे because they are transition metals. So yeah, this is it. The diagram shows the structure of an alloy. Alloy क्या होता है? You have different a metal mixed with something else. It could be a metal, it could be non-metal. जो भी है mix हुआ हुआ है. तो हमारे सामने layers mismatched हैं, इसलिए it becomes harder to break. Which statement about alloys is correct? Alloys can only be formed by mixing copper or iron with other metals. नहीं, बाकी metals को भी हम use कर सकते हैं. High carbon steel alloys are soft. जितना ज्यादा कार्बन होगा उतने ज्यादा layers disturb होंगी, उतना कम softness होगी. Softness आती है because you have layers which can slide over each other. The more mismatch there is in the size, the more difficult it is for the slide, for the layers to slide. So yeah, this one's not right. In an alloy, there is an attraction between positive ions and sea of electrons. Metal से बना हुआ है ना, तो metal वाली properties तो उसमें हैं, क्योंकि mixture है. Mixtures have the same properties as what they're made from. Very basic tenet of chemistry that we study way early in grade 7 or 8. तो ये बात ठीक है उसकी. The alloy brass has a chemical formula. दुनिया के किसी alloy का chemical formula नहीं है, क्योंकि जिन चीजों का chemical formula होता है वो pure होती हैं. तो वो या compound होगा या element होगा. Which pair of reagents will undergo a displacement reaction? Displacement कहाँ होती है? Single displacement तब होती है जब एक चीज दूसरी से ज्यादा reactive है. जैसे कि आप देख सकते हो D में you have zinc which is more reactive, copper which is less reactive. Zinc उसको displace कर देगा, redox reaction हो जाएगा. बाकी सब में whatever is inside is more reactive than whatever is outside. ठीक है? So nothing will be able to displace it. Only D is right. Where zinc जो कि ग्रे सॉलिड है वो आएगा. कॉपर सल्फेट एक्वस ब्लू सोल्यूशन है. आप एक ग्रे सॉलिड पकड़ोगे, उसमें डिप करोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपका सोल्यूशन का कलर फेड हो गया है और आपके पास एक पिंक सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो गया. इनफैक्ट ये क्वेश्चन कुछ साल पहले आई थिंक 2017 और 18 में ए लेवल्स के प्रैक्टिकल में भी आया था. लाइक उन्होंने कहा था कि करके दे. Alright, reactivity series for some metals with two gaps labeled X and Y is shown. Okay. Which row correctly identifies the metals X and Y? Basically वो हमसे क्या कह रहे हैं? Zinc से ज़्यादा reactive कौन सा, zinc से कम reactive कौन सा? So we know aluminium is more reactive than zinc, so वो X पे आ जाएगा. Iron is going to be Y. And method of extraction of Y पूछा उसने. Y को हम electrolysis से भी कर सकते हैं और reduction with carbon से भी कर सकते हैं, but the cheaper one, more affordable method is reduction with carbon. So we will take B. A is technically correct, but it is not the industrial favorite. क्यों? बहुत महंगा है. That's why B is the right answer. Iron can be extracted from the ore hematite. Yes. We also need to know about bauxite, which is Al2O3 ore of aluminium. What is the maximum mass of iron that could be produced from 500 kg of hematite? कोई मसला ही नहीं है. Basically हमें रेशो देखता है. हमें ये देखते हैं कि अच्छा आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट का एमआर क्या होता है. सो इट इज 2 times 56 प्लस 3 times 16. तो हो जाएगा 112 प्लस 48 विच इज 160. तो इसका मतलब है कि जी अगर 160 kg आयरन 3 ऑक्साइड है तो इट हैज 112 kg आयरन. तो मेरे पास अगर 500 होगा तो ये कितना बनेगा? X. So I will just take that and do it. अगर ये नहीं करना, नंबर ऑफ मोल से कर लो. आपके पास इक्वेशन है, आयरन 2 ऑक्साइड है, उसने आयरन नहीं देना है 2 और 3/2 ऑक्सीजन देगा. अब इसको यूज कर लो अगर आपने करना है तो. यू कैन ईदर डू द रेशियो मेथड फॉर mass or you can just do the chemical equation and moles and all that. That's the traditional method that we have.
Okay, aluminum is used to make saucepans because of its apparent lack of reactivity. Notice the use of these words, apparent lack of reactivity. मतलब वो ये डिनाई नहीं कर रहा है कि एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव, बट वो कह रहा है कि वो लगता है ऐसे कि रिएक्ट नहीं करता. क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड होता है. दैट्स अ फैक्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर. देयर इज अ लेयर ऑफ ऑक्साइड देयर, और वो ए है. Pollutant gases are released by bacterial decay of vegetable matter. Yes, what pollutant gas is that? Methane. ठीक है, तो वो हमें बता दिया आपसे. अगेन फैक्ट, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस. फैक्ट है, याद रखना है. दैट्स गोइंग टू बी मीथेन. सेवरल डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर सप्लाई. क्या क्या होता है वाटर सप्लाई में? पानी लेते हैं, फिल्टर करते हैं, इम्प्योरिटीज जो सॉलिड होती हैं चली जाती हैं, फिर हम उसको उसमें से प्योर उसमें से जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद उसको कार्बन में से मूव करते हैं ताकि उसका ओडर ट्रीटमेंट हो जाए, और फिर उसको क्लोरीनेशन करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो हार्मफुल सॉलिड्स हैं, वो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो खत्म हो जाए. ठीक है, सो एनी ऑप्शन दैट डील्स विद ऑल दिस हमें नजर आ जाएगी. तो फिल्ट्रेशन विल टेक केयर ऑफ द सॉलिड्स, कार्बन विल टेक care of the unpleasant odors, and chlorination will take care of the harmful microbes. So yeah, this is D. Which statement about homologous series of alkanes, organic पे आ गया, which statement about homologous series of alkanes is correct? Alkanes क्या होते थे? Saturated or excellent fuels can be cracked. They produce chlorofluorocarbons if you do substitution. ये सारा कुछ होता था alkenes में. Alkanes में. So वो कहते हैं alkanes are unsaturated. बात गलत है, वो saturated होते हैं. Alkanes have general formula CnH2n. ये alkenes की बात कर रहा है, alkanes में नहीं होता. Boiling point decreases. Boiling points decrease as the number of carbon atom per molecule increase. बात बड़ी घुमा फिरा के करेगा, लेकिन कहना क्या चाह रहा है वो कह रहा है कि when the molecule size increases, boiling point decreases. ये बात गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है? क्या ख्याल है आप लोगों का? बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा या कम होगा? जल्दी बॉइल कर जाएगा या कम बॉइल करेगा, लेट बॉइल करेगा? देखें, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ज्यादा वैंडरवाल्स फोर्सेस होंगी, क्योंकि वो ज्यादा जगहों से अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकता है ना. ठीक है, सो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना आसान है उसके लिए वैंडरवाल फोर्सेस क्रिएट करना, उतना मुश्किल है उसको बॉइल करना एट लो टेम्परेचर. So this is also wrong. Liquid alkanes become more viscous as the mass of molecule increases. Yes, that is true. बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हैं, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, विस्कोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. Which molecule has the empirical formula with the greatest relative formula mass? empirical formula दिया हुआ है. सबसे पहले देख लें सबसे ज्यादा एटम्स किस में है ओवरऑल. तो अब देखें कंपटीशन किस में है, सी और डी में. ठीक है, सी इज 5 कार्बन and D is 6 carbons. So 6 carbon का 72 plus 6 78. C is 5 carbons 60 plus 10 hydrogens 70 हो गया. तो apparently the answer should be D. लेकिन अब देखते हैं कि कहीं यहाँ पे ओ वेट अ मिनट, इन्होंने इंपेरिकल फार्मूला का पूछा, इसका नहीं पूछा. तो पहले हम इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं. CH3 C2H5 CH2 एंड CH. तो इस लिहाज से तो B बनता है. Which statement about vegetable oil and margarine made from it is correct? Vegetable oil is liquid polyunsaturated. Margarine is solid saturated. ठीक है. Both are liquids, no. Both are natural, no. Margarine has higher melting point, yes, वो solid होता है. Vegetable oil has fewer carbon double bonds. नहीं, वो unsaturated होता है. When ethene reacts with steam to form ethanol, which type of reaction takes place? क्या हो रहा है? Ethene is C2H4, steam is H2O, दोनों का addition reaction होता है. You're just adding it up. एक साइड पे हाइड्रोजन लग जाएगा, एक साइड पे OH लग जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा. So this is addition reaction. An ester is formed from a carboxylic acid and an alcohol. ठीक है. How does number of carbon, hydrogen, oxygen atoms in an ester differ from total number of these atoms in the carboxylic acid? होता क्या है esterification में? You remove water. ये ध्यान में रखिएगा.
यू आर रिमूविंग वाटर, कार्बन को कुछ नहीं कर रहे आप, तो कार्बन उतना ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन लूज हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन लूज हो जाएगा, तो same and fewer and fewer. Polylactic acid is a polymer used to make biodegradable cup. The partial structure of polylactic acid is shown. Which statements apply to polylactic acid? Linkage आपके सामने एस्टर की है. It is made by addition polymerization. नहीं, linkage है. अगर linkage ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो addition reaction से बन रहा है, लेकिन linkage है यहाँ पे. It is made by condensation. Yes, that's true. It is a polyester. Yes, that is true. Linkage is of polyester. एंड मोनोमर यूज टू मेक इट इज ईथीन. ये हो ही नहीं सकता भाई, उसमें ईथीन में कहां से एस्टर आ गए, तो इस वजह से 2 and 3. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. टू लार्ज मॉलिक्यूल्स P and Q both contain same linkage. ठीक है. P occurs naturally but Q does not. आपके ज़हन में फॉरेन नेचुरल एंड सिंथेटिक पेयर्स आने चाहिए. फैट एंड टेरलिन, प्रोटीन एंड नाइलॉन, ये आपके पास पेयर्स हैं. कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीथर्स, तो यहां पर हमारे पास फैट एंड टेरलिन आपके सामने बी इज द पेयर दैट सेटिस्फाइड है. अच्छा, ये ब्लैंक पेजेस क्यों दिए होते हैं? बिकॉज यू माइट हैव टू डू सम वर्किंग, सो दे आर ऑल देयर फॉर यू. ऑब्वियसली यू कैन मेक डू वर्किंग हेयर एज वेल. ये सब पेपर आपका है, इस पे वर्किंग करें, लिख के करें, rather than doing it mentally, and you can use those paper because answer you have to transfer. Answer आपने अपनी आंसर शीट पर करना है, इसलिए when you're practicing at home and you're solving this paper, make sure कि आप आंसर ट्रांसफर करने के प्रैक्टिस भी करें, otherwise it is possible कि आप टाइम आपके पास ना बचे. I hope that doesn't happen to anybody. All right, take care.